everyone. Today, we'll delve into the core concepts of LLM inference, exploring how these models generate text and the key components involved in the process. Let's begin. Let's start with the fundamentals. Inference is the process of using a trained LLM to generate human-like text from a given input prompt. Language models use their knowledge from training to formulate responses one word at a time. The model leverages learned probabilities from billions of parameters to predict and generate the next token in a sequence. This sequential generation is what allows LLMs to produce coherent and contextually relevant text. The attention mechanism is key to LLM's ability to understand context and generate coherent responses. It allows the model to focus on the most relevant information when predicting the next word. For example, in "The capital of France is," France and capital are crucial for predicting Paris. This process of identifying relevant words has been incredibly effective. While the basic principle of predicting the next token hasn't changed much since models like BERT and GPT-2, significant advancements have been made in scaling neural networks and making attention work efficiently for much longer sequences at lower costs. In short, attention is what makes modern LLMs coherent and context-aware, setting them apart from older models. Now that we understand attention, let's explore context length, or the model's attention span. Context length is the maximum number of tokens, words or parts of words, an LLM can process at once. Think of it as the model's working memory. This is limited by the model's architecture and size, available computational resources, and the complexity of the input-output. Ideally, we'd have unlimited context, but hardware and cost constraints make this impractical. Different models are designed with varying context lengths to balance capability and efficiency. Essentially, it's the maximum number of tokens the model considers when generating a response. Prompting involves structuring the input to guide the LLM's generation toward the desired output. Understanding how LLMs predict the next token by analyzing input token importance helps us craft better prompts. The wording of your input sequence is crucial because the model relies on it to make predictions. Careful prompt design makes it easier to guide the LLM's generation effectively. The inference process consists of two main phases: prefill and decode, working together like an assembly line. The prefill phase is the preparation stage. It involves 1. Tokenization, converting text to tokens; 2. Embedding conversion, transforming tokens into numerical representations; and 3. Initial processing, running embeddings through the model's networks. This phase is computationally intensive as it processes all input tokens at once, like reading an entire paragraph before responding. The decode phase is where text generation happens, one token at a time, autoregressive process. For each new token, it involves 1. Attention computation, looking back at previous tokens; 2. Probability calculation, likelihood of next tokens; 3. Token selection, choosing the next token; and 4. Continuation check, deciding to stop or continue. This phase is memory intensive as it tracks all previously generated tokens and their relationships. Sampling strategies control how the model generates text, allowing adjustments between creativity and precision. When choosing the next token, the model starts with raw probabilities, logits, for all vocabulary words. This process involves 1. Raw logits, the model's initial scores for each potential next word; 2. Temperature control, a dial for creativity. Higher values 1. Increase randomness; lower values 1. Make choices more focused and deterministic. 3. Top P, nucleus, sampling, considers only the most likely words whose probabilities sum up to a chosen threshold, for example, 90%. 4. Top K filtering, considers only the top K most likely next words. A common challenge is LLM repetition, like a speaker repeating points. We use penalties to address this. 1. Presence penalty, a fixed penalty applied to any token that has appeared before, discouraging reuse of the same words. 2. Frequency penalty, a penalty that increases based on how often a token has been used. The more a word appears, the less likely it is to be chosen again. These penalties adjust the raw probabilities early in the token selection process, gently nudging the model to explore new vocabulary and keep the output fresh. We need to control how much text the LLM generates, just like pacing a story. This is crucial for practical uses, like generating a tweet versus a blog post. Control methods include 1. Token limits, setting minimum and maximum token counts. 2. Stop sequences, defining specific patterns, for example, wan nin, that signal the end of generation. 3. End of sequence, EOS, detection, letting the model naturally conclude its response when it generates a special EOS token. For example, for a single paragraph,
Setting a max of 100 tokens and using win-win as a stop sequence ensures focused and appropriately sized output. Unlike strategies that decide one token at a time, Beam Search takes a more holistic approach, exploring multiple possible sequences simultaneously, like a chess player thinking moves ahead. Here's how it works. 1. Maintain multiple candidate sequences, beams, for example, 510. 2. At each step, compute probabilities for the next token for each candidate. 3. Keep only the most promising combinations, beam width, of sequences and next tokens. 4. Continue until the desired length or a stop condition is met. 5. Select the sequence with the highest overall probability. This often yields more coherent and grammatically correct text, but requires more computational resources. Deploying LLMs involves practical challenges and requires performance optimization. Key metrics include 1. Time to first token, TTFT, how quickly the first response appears, affected by prefill, crucial for user experience. 2. Time per output token, TPOT, speed of generating subsequent tokens, decode phase, determines overall generation speed. 3. Throughput, how many requests can be handled simultaneously, affects scaling and cost. 4. VRAM usage, GPU memory required, often the main constraint. Managing context length is a major challenge. Longer contexts offer more information, but increase memory usage quadratically and decrease processing speed linearly. Finding the right balance is key. KV, key value, caching, is a vital optimization. It stores and reuses intermediate calculations from the attention mechanism, significantly speeding up inference, especially for long contexts, by reducing repeated computations. The trade-off is increased memory usage, but the speed benefits usually outweigh this cost. In conclusion, understanding LLM inference is crucial for effective deployment. We've covered attention, context, the two-phase process, prefill, decode, sampling strategies, temperature, top P, K, penalties, length control, beam search, and practical challenges, optimizations, metrics, context length, KV cache. Mastering these concepts helps build efficient LLM applications. Remember, this field evolves rapidly. Stay curious and experiment to find the best approaches for your use cases. Context lengths to balance capability and efficiency. Yeah, I don't think he talked anything about initial processing unless I missed it. Like, what is that initial processing? Wasn't clear.
As far as code is concerned, like, do we have separate code for tokenizing and then embedding, or it's usually in the same line of code? नहीं, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो हमने एग्ज़ाम्पल्स में चेक किया था, हमारे केस में तो यूनिक वर्ड्स को लेके उसको एक यूनिक नंबर दे रहे हैं हम लोग, राइट? यूनिकली जैसे भी अगर एक वर्ड है, सो उसके वैल्यूज़ को प्लस करके जो भी वैल्यू आती है, उसको हम उसको एक नया टोकन मान लेते हैं, राइट? और एम्बेडेड कन्वर्जन में मोस्टली हमने जो जो 2 चीज़ देखी, वो ये देखी, या तो एज़ अ टोकन ही उसकी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, या तो जैसे हमने वेक्टर बोला है, राइट? कोई भी वेक्टर बना देते हैं उसका, ना कि Hmm. कितने भी डायमेंशन का, और उसको एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों को मिला के टोकनाइज़ेशन और वेक्टर को मिला के उसका एम्बेडेड कन्वर्जन हो गया। Hmm. और इनिशियल प्रोसेसिंग, आई थिंक वो एक बार हमने पहले बात की थी ना, जहाँ पर आई थिंक वो है, मतलब एम्बेडेड के बाद हम इनिशियल प्रोसेसिंग करते हैं, कोड में देखा है, लेकिन इवन आई वाज़ नॉट अवेयर कि एग्ज़ैक्टली वो इंटरनली करता क्या है? And decode, working together like an assembly line. The prefill phase is the preparation stage. It involves 1. Tokenization, converting text to tokens. 2. Embedding conversion, transforming tokens into numerical representations. And 3. Initial processing, running embeddings through the model's networks. This phase is computationally intensive as it processes all input tokens at once, like reading an entire paragraph before responding. The decode phase is where text generation happens, one token at a time, autoregressive process. For each new token, it involves 1. Attention computation, looking back at previous tokens. 2. Probability calculation, likelihood of next tokens. 3. Token selection, choosing the next token. And 4. Continuation check, deciding to stop or continue. This phase is memory intensive as it tracks all previously generated tokens and their relationships. Sampling strategy. उसको So ऐसे running embedding through the network, basically, that is counting as initial processing. Hmm. पहला वाला तो ऐसे ही है कुछ, नहीं नहीं, मिस्ट्राल देखा था। हाँ, इसमें एस एस टोकन क्या है विथ टोकन नंबर स्टार्ट। नहीं, सभी के लिए करेगा, उसको पैटर्न चाहिए एक्चुअली। ये अंडरस्कोर एस का मीनिंग क्या है, वो भी वो आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए तो न्यूमेरिकल है वो, राइट? कि किसके आगे आता है, किसके पीछे आता है, प्रिडिक्ट भी करेगा उसके बिजनेस।
हाँ, करेक्ट। नहीं, वो रिक्वायरमेंट पे है ना, रिक्वायरमेंट पे ही है सब कि किस चीज़ को तुम टोकन यूनिक वैल्यू किस चीज़ को मान सकते हो, उसका आउटपुट भी तुम्हें वैसे ही मिलेगा, राइट? अगर स्पोर्ट्स को तुम ऐसे ही एक तरीके से ही देख रहे हो, न्यू लाइन नहीं देख रहे, तो न्यू लाइन को भी वो टोकन नहीं बनाएगा, लेकिन किसी-किसी केस में न्यू लाइन को भी टोकन बनाएगा। लेकिन उसने बताया नहीं टेम्परेचर से एग्ज़ैक्टली वो करता क्या है? वो एवरेज हाँ, वो एक्चुअली फ़ंक्शन में कुछ यूज़ होता होगा कि नॉर्मल मीन एवरेज निकालना है कि क्या करना है? आई डोंट नो। एक यही है हमारे हाथ में, अगर मॉडल अगर हम भेजते हैं, राइट? कौन-सा मॉडल कर रहे हैं, किस टाइप का है, और एक एक और वेरिएबल ये टेम्परेचर, बस। एक क्वेश्चन था यार, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये एन्कोडिंग में ही होता है, राइट? मैक्सिमम केस में। तो हम लोग क्या पहले विदाउट ये क्वेश्चन मार्क किया हुआ ट्रेन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाला भेजते हैं, राइट? नहीं, नहीं, आई गॉट इट। मैं ये नहीं, नहीं, ठीक है, नो क्वेश्चन। नहीं, नहीं, मैं ये देख रहा था कि जो इसमें लिखा रहता है ना, मैं आई गॉट कन्फ्यूज़ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट? तो आई वाज़ थिंकिंग कि हम इसको ट्रेन कर रहे हैं क्या? तो मतलब ये नहीं है, बात ये कि ऑलरेडी ट्रेन्ड है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ऑलरेडी ट्रेन से निकाल रहा है, राइट? वही है बस। हुँ। नहीं, लेकिन इसमें टेम्परेचर स्केलिंग का मतलब क्या है यार? कोई लिखा है क्या उसने टेम्परेचर स्केलिंग का? टेम्परेचर कंट्रोल लाइक अ क्रिएटिव डायल, हायर सेटिंग
mark choice for more random and creative. Lower setting mark them more focused and deterministic. Low. नहीं, लेकिन अगर वो 5 निकालेगा तो भी 5 हाई प्रोबेबिलिटी निकालेगा, राइट? उन उसमें क्या डिफरेंस है? 5 हाई प्रोबेबिलिटी निकालने में फिर वो क्या करता है? फिर वापस ट्रेन करता है क्या? हुँ, हुँ।
तो इसको तो कम करने का मतलब यही है कि डिफरेंट सोर्सेस से डाटा डाला जाए, राइट? नॉट इवन फ्रॉम वन रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, सो इट विल बिकम अनबायस्ड। और कोई तरीका है नहीं, राइट? हाँ हाँ, आई थिंक वो उसके फंक्शनैलिटीज थोड़े कम होंगे। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, it really doesn't matter. I think the thing is, if we want to add more people, we have to add before the 30 days. That's the main functionality. What happens inside the pipeline function. In this video, we'll look at what actually happens when we use the pipeline function of the transformers library. More specifically, we'll look at the sentiment analysis pipeline and how it went from the two following sentences to the positive and negative labels with their respective scores. As we've seen in the pipeline presentation, there are three stages in the pipeline. First, we convert the raw text to numbers the model can make sense of using a tokenizer.
Then, those numbers go through the model, which outputs logits. Finally, the post-processing steps transform those logits into labels and scores. Let's look in details at those 3 steps and how to replicate them using the Transformers library, beginning with the first stage, tokenization. The tokenization process has several steps. First, the text is split into small chunks called tokens. They can be words, part of words, or punctuation symbols. Then, the tokenizer will add some special tokens if the model expects them. Here, the model used expects a CLS token at the beginning and a set token at the end of the sentence to classify. Lastly, the tokenizer matches each token to its unique ID in the vocabulary of the pre-trained model. To load such a tokenizer, the Transformers library provides the AutoTokenizer API. The most important method of this class is FromPretrained, which will download and cache the configuration and the vocabulary associated to a given checkpoint. Here, the checkpoint used by default for the sentiment analysis pipeline is Distilbert Bayesian case fine-tuned SSS2 English, which is a bit of a mouthful. We instantiate a tokenizer associated with that checkpoint, then feed it the 2 sentences. Since the 2 sentences are not of the same size, we'll need to pad the shortest one to be able to build an array. This is done by the tokenizer with the option padding equal true. With truncation equal true, we ensure that any sentence longer than the maximum the model can handle is truncated. Lastly, the return tensors option tells the tokenizer to return a PyTorch tensor. Looking at the result, we see we have a dictionary with 2 keys. Input IDs contains the IDs of both sentences, with 0 where the padding is applied. The second key, attention mask, indicates where padding has been applied, so the model does not pay attention to it. This is all what is inside the tokenization step. Now let's have a look at the second step, the model. As for the tokenizer, there is an AutoModel API with a FromPretrained method. It will download and cache the configuration of the model, as well as the pretrained weights. However, the AutoModel API will only instantiate the body of the model, that is, the part of the model that is left once the pretraining head is removed. It will output a high-dimensional tensor that is a representation of the sentences passed, but which is not directly useful for a classification problem. Here, the tensor has 2 sentences, each of 16 tokens, and the last dimension is the hidden size of our model, 768. To get an output link to our classification problem, we need to use the AutoModel for sequence classification class. It works exactly as the AutoModel class, except that it will build a model with a classification head. There is one autoclass for each common NLP task. The model. As for the tokenizer, there is an AutoModel API with a FromPretrained method. It will download and cache the configuration of the model, as well as the pretrained weights. However, the AutoModel API will only instantiate the body of the model, that is, the part of the model that is left once the pretraining head is removed. It will output a high-dimensional tensor that is a representation of the sentences passed, but which is not directly useful for our classification problem. Here, the tensor has 2 sentences, each of 16 tokens. एक तो ये है कि he is just instantiating the model like we have done already, like in many cases. It's just like the structure of what, and again I don't understand the head part of this, where he says that only the body of the model is instantiated and not the head. And in this case, he's taking like 2 input strings and basically whatever is coming from the tokenizer will then go to the model, right? So if we have defined a tokenizer to output, 2 arrays, then we have to instantiate the model to accept these 2 arrays. And when instantiating the model, we can define how many hidden layers it will have. So that is up to us. That is a choice that we make. That's a hyperparameter for us to define. In this case, he's saying it's 768 or something. I think that's about it, right? But getting to the auto model for sequence, हाँ क्या नहीं दिया? Hmm.
I mean, like the model already has 768 hidden. So that's the it's printing that basically, right? So at the time of training this model, the hyperparameter given would have been 768 hidden layers. Instantiates the body of the model. Huh. That is, the part of the model that is left once the pre-training head is removed. It will output a high-dimensional tensor that is a representation of the sentences passed, but which is not directly useful for a classification problem. Here, the tensor has two sentences, each of 16 It's not that tokens, it's not and the directly last useful. dimension We is can make our own softmax out of that and put a neural network there and say कि हम अपना ही classification कर रहे हैं. But that is already done in this sequence model that he auto model of classification type that he will discuss forward ahead in the video. hidden size of our model, 768. To get an output link to our classification problem, we need to use the AutoModel for sequence classification class. It works exactly as the AutoModel class, except that it will build a model with a classification head. There is one autoclass for each common NLP task in the Transformers library. Here, after giving our model the two sentences, we get a tensor of size 2 by 2, one result for each sentence and for each possible label. Those outputs are not probabilities yet. We can see they don't sum to 1. This is because each model of the Transformers library returns logits. To make sense of those logits, we need to dig into the third and last step of the pipeline, post-processing. To convert logits into probabilities, we need to apply a softmax layers to them. As we can see, this transforms them into a positive number that sum up to 1. The last step is to know which of those corresponds to the positive or the negative label.
This is given by the id2label field of the model config. The first probabilities, index 0, correspond to the negative label, and the seconds, index 1, correspond to the positive label. This is how our classifier built with the pipeline function picked those labels and computed those scores. Now that you know how each step works, you can easily tweak them to your needs.
जो ये जीरो शॉट और ये सेंटिमेंट बोल रहा है, इसके लिए अलग अलग मॉडल है उसके पास कि एक ही मॉडल को वो यूज करता है? मतलब डिफॉल्ट मॉडल इन द सेंस दोनों के लिए एक ही मॉडल है ऐसा?
एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा और एक वर्ड होगा। तो वर्ड जो है हेलो बीच वाला है। तो 101, 102 are start and end. Hello is 7502.
हिडन साइज और वोकैब साइज सेम है क्या दोनों का?
मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एल्गो का ही डिफरेंस है, जैसे इनकोडिंग डिकोडिंग का डिफरेंस होता है ना, बस वो हाइपर पैरामीटर्स तो सारे ही सेम है दोनों के, राइट? हम्म। नहीं, लेकिन क्लास में भी डिफरेंस है, वो तो आउटपुट ही है ना हमारा। क्लास में भी डिफरेंस क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, राइट? क्या? वो अरे के दो 8 के 2 अरे ना। वो एक सिंगल एम्बेडिंग, सिंगल अरे अरे लेंथ। वो तो हिडन लेयर्स है ना। तुम टेंसर्स को बैचेस में डालते हो ना, अरे अरे में करके, वही चीज़ है। तो वो 2 16 7 68 था ना, पहले देखा था ना हमने, 2 8 7 68 1 2 वो दो 16 के दो ये।
Hmm. Hmm. Correct, correct. उसको ट्रंकेट भी कर देता, शायद उसको 16 ही चाहिए। नहीं, वो तो उसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ ही है मिलिंद। वो उसने क्या किया है, 2 बैचेस के हिसाब से उसके पास जितना भी डाटा था उसको उसने पैडिंग करके उसके बराबर कर दिया है। तो लेकिन एक साथ उसको सिर्फ 16 का कॉन्टेक्स्ट ही चाहिए। Hmm.
clear है अभी तो. Only thing is like the one which we can technically take the base model without the head, make our own head, and see if it like outputs as expected. That's the only trial we can do, I guess. वही है, code for the head is quite straightforward. You can change it. It should technically be just 2-3 lines of code, right? Adding that linear layer. उसके लिए एक मॉडल इंस्टेंशिएट करना है, लेयर इंस्टेंशिएट करना है, उसको ये इनपुट डिफाइन करना है, आउटपुट्स लेने हैं एक और उसमें डालने हैं. ठीक है. How to instantiate a transformers model. In this video, we'll look at how we can create and use a model from the transformers library. As we've seen before, the AutoModel class allows you to instantiate a pre-trained model from any checkpoint on the Hugging Face hub. It will pick the right model class from the library to instantiate the proper architecture and load the weights of the pre-trained model inside. As we can see, when given a BERT checkpoint, we end up with a BERT model, and similarly for GPT-2 or BART. Behind the scenes, this API can take the name of a checkpoint on the hub, in which case it will download and cache the configuration file as well as a model weights file. You can also specify the path to a local folder that contains a valid configuration file and a model weights file. To instantiate the pre-trained model, the AutoModel API will first open the configuration file to look at the configuration class that should be used. The configuration class depends on the type of the model, BERT, GPT-2, or BART, for instance. Once it has the proper configuration class, it can instantiate that configuration, which is a blueprint to know how to create the model. It also uses this configuration class to find the proper model class, which is then combined with the loaded configuration to load the model. This model is not yet a pre-trained model, as it has just been initialized with random weights. The last step is to load the weights from the model file inside this model. To easily load the configuration of a model from any checkpoint or a folder containing the configuration file, we can use the AutoConfig class. Like the AutoModel class, it will pick the right configuration class from the library. We can also use a specific class corresponding to a checkpoint, but we'll need to change the code each time we want to try a different model architecture. As we said before, the configuration of a model is a blueprint that contains all the information necessary to create the model architecture. For instance, the BERT model associated with the BERT base case checkpoint has 12 layers, a hidden size of 768, and a vocabulary size of 28,996. Once we have the configuration, we can create a model that has the same architecture as our checkpoint, but is randomly initialized. We can then train it from scratch like any PyTorch model. We can also change any part of the configuration by using keyword arguments. The second snippet of code instantiates a randomly initialized BERT model with 10 layers instead of 12.
Saving a model once it's trained or fine-tuned is very easy. We just have to use the save pre-trained method. Here, the model will be saved in a folder named my.model inside the current working directory. Such a model can then be reloaded using the from pre-trained method. To learn how to easily upload this model to the hub, check out the Push to Hub video. इसमें कुछ नहीं बताया उसने, उसने सिर्फ ये बताया कि अगर आपको किसी का भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन लेके उसके बेसिस पे मॉडल आप बना लो। लेकिन मॉडल भी बनाने के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन को अल्टर करना है तो उसको ओवरराइड कर सकते हो और उसने फिर उसके बाद उसको ट्रेन करो, जो कि उसने उसका कोड नहीं लिखा। और ट्रेन करने के बाद आप उसको सेव भी कर सकते हो, जो आपको मॉडल बाद में जो वैल्यूज़ रहेंगी उसको आप सेव कर दो और गोइंग फॉरवर्ड उस फ़ाइल को जिसमें आपने ट्रेन कर रखा है, उसको आप वापस लेके मॉडल बना सकते हो डायरेक्टली, ट्रेन्ड मॉडल। बस यही है। कौन-सा? ओके। लेकिन जहाँ पर आप कॉन्फ़िग से मॉडल बनाते हो, वहाँ पर ओवरराइड करते हो तो आप अल्टर कर रहे हो ना अल्टीमेटली अपना मॉडल, राइट? मैं जो बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आप कॉन्फ़िग से अपना मॉडल बनाते हो, तो वहाँ पर अगर आप उसको ओवरराइड कर रहे हो, उसके आर्किटेक्चर को ओवरराइड कर रहे हो, तो एक तरीके से अपना नया मॉडल ही बना रहे हो ना आप। हुँ, हुँ।
ग्रेडियंट तो वो अगर नहीं सेंड किया तो बाय डिफॉल्ट मेन मॉडल का नहीं लेगा क्या? हाँ, लेकिन वो ग्रेडियंट तो लेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सेम ही यूज़ कर सकता है, राइट? नहीं, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब तो ये होता है ना कि सबसे लोअर वैल्यू को जो आइडेंटिफाई करता है वो, राइट? तो अगर वो ही लॉजिक मेन से उठा लेगा, अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो सिर्फ क्लासिफिकेशन के फॉर्म में ही तो उसको आइडेंटिफाई करना है वो। ओके। ओके, ओके, ओके। ओके। ग्रेडियंट उसने नहीं दिया मतलब कॉन्फिग में हम लोगों को, तो इसलिए हमें यहाँ पर डिफाइन करके देना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ग्रेडियंट का मतलब ट्रेनिंग फेज में भी वो एक फंक्शन के फॉर्म में ही तो आइडेंटिफाई करता है ना चीज़ों को ग्रेडियंट में, राइट? तो अगर वो फंक्शन वो कॉन्फिग में देता कि हमारे पास जेनेरिक ये मेथड्स हैं ग्रेडियंट्स के, तो यहाँ पर वो इनहेरिट कर लेता, राइट? नॉट श्योर मतलब वो पॉसिबल है कि नहीं ये सब। हुँ। हाँ, बैक मतलब जो भी तुम एट लास्ट बैक प्रोपगेशन करते हो, तो ग्रेडिएंट का तो काम ही वही है, राइट? तो वो ऐसे नंबर ऑफ वेट्स पे डिपेंड करते नहीं, वो तो जेनेरिक है, आप कोई भी मेथड यूज़ करो उसके लिए, राइट? तो लेकिन कौन-सा मेथड यूज़ कर रहे हो, वो सब पे लगेगा, राइट? तो मेरा ये था कि ये चीज़ें कॉन्फिग में होनी चाहिए, कि मैं उस मॉडल के लिए उस कॉन्फिग में कौन-सा ग्रेडिएंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा कोड क्यों लिखना पड़ेगा उसमें? तो ये बेसिक ग्रेडिएंट्स तो होते ही होंगे कि क्लासिफिकेशंस में हम ये ग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं या उस टाइप के मॉडल्स के लिए ये ग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, राइट? नहीं, मैं देख ही रहा था बट आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से। वो जो बोल रहा था कि तुम्हारा जो प्रोसेस स्टेप है, उसमें तुम रन योर एम्बेड थ्रू द नेटवर्क, वो एक बोला उसने। ग्रेडियंट्स तो अभी इस केस में तो कुछ लाइक ऑटो मॉडल में तो कुछ करना ही नहीं है हमको।
हाँ करेक्ट, तो वो डेटा देना पड़ेगा उसको ना। मेरा ये मानना है कि क्या हम इसको जो हम हेड पे डाल रहे हैं, अगर मेरे पास ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है और मैं ये मॉडल इसमें एक और डाल रहा हूँ, इसको और उसके ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ, तो क्या ये शुरू से करेगा कि ये उसके आगे से करेगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं क्लासेस नहीं, ये मॉडल का इनपुट क्या है? मॉडल का इनपुट इज सम वेक्टर्स, करेक्ट। राइट? जो तुम एक लेयर बना रहे हो, लीनियर लेयर और दो लीनियर लेयर, वट एवर यू वांट, उसके लिए इनपुट इज योर एम्बेडेड वेक्टर्स। अब उस फॉर एवरी सेट ऑफ एम्बेडेड वेक्टर्स यू नीड अ क्लासिफायर सेइंग कि ये पॉजिटिव है, ये जो तुम सेंटेंस तुमने दिया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो तुम एज इनपुट दोगे हर एक वेक्टर के लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब क्लासिफिकेशन होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, and then use that to train the model using our typical back propagation जो हम लोग करते आ रहे हैं इतने सालों से। नहीं, वो Right. अंडरस्टूड, लेकिन ये जो हाँ। अभी बात हम कर रहे हैं, ये स्क्रैच से ट्रेन करने की बात कर रहे हैं कि ये बीच में से ट्रेन करने की बात कर रहे हैं? कि ये पॉसिबल The है क्या? first part of it is already trained. हाँ, ओके। The head part, which is to classify it as a positive or a negative, that also they have pre-trained and kept, but Correct. we can also pre-train that as per our data set. करेक्ट। तो उसके वेट्स हम ले रहे हैं, राइट? उसके weights ले रहे हैं मतलब कि उसका जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है, उसमें उसके खुद के भी वेट्स होंगे, राइट? नहीं, we can instantiate a model with all the weights set to whatever, 0 or random, and then we have to fine tune that. नो, फाइन ट्यून ठीक है, लेकिन जो हम मतलब ये तो ये हो, मतलब वेट्स तो ले ही रहे हैं, राइट? उसके बाद चाहे हम अपना नया डाटा उसको ओवरराइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट इज़ अवर चॉइस। लेकिन उसका जो मॉडल हम लेंगे, तो उसमें ऑलरेडी वो, अगर हम उसमें इनपुट देंगे तो आउटपुट तो आएगा ही, राइट? हाँ, तो उसके weights तो ऑलरेडी हैं ना, करेक्ट, मेन मॉडल करेक्ट। में तो उसके weights ऑलरेडी हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर उसने वो वेट्स ऑलरेडी हमें अब उसके पास हैं और हम उसमें थोड़ा-सा चेंजेस कर रहे हैं, अपने हाँ लेबल्स चेंज कर रहे हैं, तो वो लेबल्स चेंज करने का पैटर्न सेम ही है, लेकिन ग्रेडिएंट तो हम उससे इनहेरिट कर सकते हैं, राइट? अगर उसके मॉडल में ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि मैंने कौन-सा ग्रेडिएंट यूज़ किया था, तो अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते तो उसको इनहेरिट करना चाहिए उस ग्रेडिएंट को, राइट? क्योंकि वो मेथड मतलब फंक्शन तो सेम ही है आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे आप 2 क्लासेस जो या 3 दो, उसको तो अपना लॉस ही आइडेंटिफाई करना है, राइट? मैं समझा नहीं तो कि नहीं क्या कोशिश कर रहा है। नहीं, ठीक है। आई थिंक ग्रेडिएंट में मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देते हो मिलन, एक बार बताना ग्रेडिएंट में? हम्म, उनका ही। हाँ। हम्म,
Okay. हाँ हाँ, यही मैं बोल रहा था बेसिकली कि हम अपना ही एक हेड बनाते हैं। उसके लिए डेटा सेट भी हमको हगिंग पेज से डाउनलोड करना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा सेट लें, and we can train it ourselves. So that will. Now my only question was, uh, will it change the weights of the original base model? We can choose to change it, but I don't think that you do that. You just change the weights of the head, right? Because changing the weights of the original model will can be done. Of course, you can backpropagate all the way. It doesn't need to be done. You can do it, but you can change, just like you can just define your own head and you can say मेरा base model ठीक है as it is. It's a choice you make. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Of course, I mean that's your call. But yeah, I think what you're saying is typically you would do this whole fine tuning process to change the weights of the base and not necessarily only get a new head for yourself. तो ये किन केसेस में किया जाता है? कुछ लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं इसके? तो मत करो। Small in comparison to the original data set in to which the model was trained on. वो अगर तुम कोई बड़ा LLM ले रहे हो, उसको फाइन ट्यून कर रहे हो, तो उसको हाथ मत लगाओ, because that would have been trained on billions of documents or whatever, and what you have is a few thousand. So what you just focus on is the head part of it. Is that what it is? Of course. Hmm.